नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मैंने शुरू किया है मार्केटिंग के लेक्चर्स के लिए। आई हैव ट्राइड टू मेक द मार्केटिंग लेसन्स सिंपलर in this channel of mine. This channel would be containing the lectures pertaining to basics of marketing and the whole marketing which is meant for the undergraduate students. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग की, जिसके अंदर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, इसके की टर्म्स और मार्केटिंग को कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है उसके बारे में बात की जाएगी। सो हैप्पी लर्निंग। Let us first define marketing. What do you mean by the term marketing? As defined by American Marketing Association, marketing is an organizational function. That means it is one of the functions of the various functions that are being performed by an organization. For example, production, HR, marketing, all these functions are being performed by an organization, and marketing is one of them. Marketing is a function is the only function that generates revenues. मार्केटिंग ही एक ऐसा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का जिससे पैसा जनरेट होता है, और ये पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और उसकी आगे प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड. दैट इज़ वाई marketing is a very very important function of an organization, and it has to be done in a very very comprehensive manner so that the leads convert into sales और sales generate होके organization के लिए revenue generate हो पाए. So, which means that it is one of the functions, of course, very important. And then, how is it done? It is done in the form of processes whereby we create, communicate, and deliver value to the customers. Marketing के द्वारा हम कस्टमर्स को के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनको वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं और उनको वैल्यू डिलीवर करते हैं. अब आप सोचेंगे वैल्यू कैसे डिलीवर हो रही है? यहाँ पे आप वैल्यू को प्रोडक्ट की फॉर्म में ही देखिए. इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग के द्वारा हम वो प्रोसेसेस अडॉप्ट करते हैं जिससे हम एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें, उसके बारे में कम्युनिकेट कर सकें कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को टाइम पे उनको डिलीवर कर सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग. सो ये समझना कि मार्केटिंग तो केवल सेलिंग है इज़ वेरी रॉन्ग. मार्केटिंग सेलिंग ही नहीं है, मार्केटिंग सेलिंग से बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ इन्वॉल्व करती है. हम आगे देखते हैं इसी डेफिनेशन के अंदर वो क्या कह रहे हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स. मार्केटिंग से कस्टमर्स के रिलेशनशिप्स भी मैनेज किए जाते हैं इन द वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स. सो वो रिलेशनशिप्स इस तरह बिल्ड किए जाते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को और उसके सारे स्टेक होल्डर्स को उनका फ़ायदा मिल सके. सो यू सी, simply thinking marketing as selling is wrong. It is much more than only selling. It does a lot of value delivery to the customers and also helps in maintaining the customer relationships apart from doing many many other functions, right? So this is a very very comprehensive definition that has been given by American Marketing Association, and it tells you what all is being done by the marketers and what all marketing consists of. अब मार्केटिंग की डेफिनेशन समझने के बाद हम आ जाते हैं कुछ की टर्म्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए एज मार्केटिंग स्टूडेंट्स, कि क्या क्या इनका मतलब है. अगर हम कहते हैं नीड्स, वांट्स, डिमांड्स, वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, व्हाट डज इट मीन. अब यहाँ पे जब वर्ड ये वैल्यू यूज़ किया गया तो उसका मीनिंग यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कस्टमर वैल्यू के अंदर. सो कमिंग ऑन टू कस्टमर नीड्स, we need to understand the meaning of customer need. Need basically is the basic requirement of humans, right? अगर आपको किसी चीज़ की एक नीड है, दैट मीन्स द डिप्रीवेशन, देयर इज अ फेल्ट डिप्रीवेशन. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रही है, सो दैट इज़ अ नीड. So there's a felt feeling that you want something. So that is a need. Felt deprivation, when you feel something you want to have, or when you're craving for something, maybe it's when you're thirsty, when you want some clothes, any kind of need might be there. So जो basic requirement एक ह्यूमन बीइंग को सेल्फ एस्टीम की फील होती है या प्रेस्टीज की फील होती है, तो वो नीड के अंदर आता है. सो जब फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी को भूख लग रही है, सो दैट मीन्स ही नीड्स फूड, राइट? सो उसको कुछ खाने को चाहिए. अब वांट्स क्या हो जाती है कि वो क्या खाना चाहता है.
उसको नीड फील हुई दैट ही इज हंग्री एंड ही वांट्स टू हैव समथिंग. द वांट वुड बी व्हाट वुड ही लाइक टू हैव, व्हाट वुड ही वांट टू हैव, whether he wants to have pizza or he wants to have a burger or is okay with roti sabzi. So what is he wanting? So that becomes a want, right? So needs are the basic requirements, whereas wants are directed to certain specific products or services. For example, I told you that for my hunger, I would like to have pizza. So pizza is my want. Now coming on to the demand. Demand is basically the capability of the person to pay for it. Though I want to have pizza, but I cannot afford it. Yeah, today I don't have the money to pay for that pizza. So that means my want would not convert into demand because I don't have the capacity to pay or the ability to pay. So when this want is associated or it goes hand in hand with the ability to pay, then the want will convert into demand. Otherwise, want will remain want and the demand will be for some other product, right? So एक need जो है वो वांट में तब कन्वर्ट होती है जब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाती है, और वो वांट डिमांड में तब कन्वर्ट होती है जब उसके उसके लिए आपके पास कैपेसिटी टू पे रहती हो, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर नीड, a want and a demand. Now coming on to the customer value. You remember I talked about value here and I told you let us not talk about value, let us assume it as a product. अब मैं बताती हूँ कि वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली क्या है. Value means the benefits that are likely to accrue from a purchase of the product or service. एक कस्टमर को जब एक प्रोडक्ट से कुछ वैल्यू अक्रू होता है, कुछ बेनिफिट अक्रू होता है, वो जो एक्सपेक्ट करता है कि मैं जब ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मुझे इससे ये बेनिफिट मिलने चाहिए. नाउ दीज बेनिफिट्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स. कुछ लोग कुछ वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं, कुछ लोग डिफरेंट वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं. तो सेम वैल्यू हो सकता है सेम प्रोडक्ट से हर कोई ना एक्सपेक्ट कर रहा हो. So basically, when I purchase a product, what is my perception of the benefit that would accrue from that product? उस प्रोडक्ट को खरीदने से जो बेनिफिट मैं चाहती हूँ वो जब मुझे मिल जाता है, दैट मीन्स मुझे वो वैल्यू डिलीवर हुई. For example, if I wanted to buy a washing machine and I am expecting the benefit of कन्वीनियंस, कि अगर मैं वॉशिंग मशीन खरीदती हूँ तो मैं बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए वॉशिंग करना, वॉशिंग क्लोथ्स. बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई बाय द वॉशिंग मशीन, आई फाइंड इट वेरी टेक्निकल एंड वेरी कम्बरसम, कि उसका प्रोसीजर्स या उसकी सारी जो ऑपरेशंस हैं वो इतने टेक्निकल हैं कि मुझे कन्वीनियंस के बजाय उसमें दिक्कत होना शुरू हो गई. सो दैट मीन्स द प्रोडक्ट हैज़ नॉट डिलीवर्ड वैल्यू टू मी. I'll give you another example. For example, फूड प्रोसेसर. कुछ लोगों ने फूड प्रोसेसर खरीदा कि उससे हमारे को कन्वीनियंस हो जाएगी, बट फूड प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए हर बार उसकी अटैचमेंट्स चेंज करना, हर बार उसको बार बार उसको चेंज करना, हर नई चीज़ के लिए नया अटैचमेंट लगाना, मेड इट वेरी कम्बरसम एंड स्लोली स्टडली, बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू डिलीवर वैल्यू फॉर विच इट वॉज मेंट. Ultimately this product had was became very the customers were dissatisfied and they stopped buying the product, and it is not very now common in the market. So this leads to the downfall of a प्रोडक्ट. सो एक वैल्यू डिलीवर होनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो मार्केटर्स को ये बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड वैल्यू जो भी एक कस्टमर बेनिफिट उससे एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है. Okay, now coming on to the customer satisfaction. Now, what is customer satisfaction? Customer satisfaction is that the product's perceived performance relative to customers' expectation. कि जो कस्टमर की perceived performance है, perceived actually you cannot determine a value in the absolute terms. वैल्यू को एब्सोल्यूट टर्म्स में डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा वर्ड यूज किया जाता है परसीव्ड वैल्यू, कि जो एक कस्टमर परसीव करता है बेनिफिट को, क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट उसको हम एक क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए परसीव्ड वैल्यू की बात की जाती है. सो जब ये परसीव्ड वैल्यू, जो भी हम परसीव्ड बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट से, जब एक वो कस्टमर को मिल जाते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने से, then the customer फील्स
satisfied. So that means when the customer's satisfaction, when the customer's expectations meet the customer's perceived value from the product, then the customer becomes highly satisfied. For example, if a girl buys some cosmetic to look beautiful, so when she uses it, she does not look as beautiful as she expected it to look. So what happens? She'll not be satisfied. But if she looks beautiful with those cosmetics, she will feel highly satisfied, right? So it is very important for the product to deliver the actual value, and that actual value should correspond to the to the expectation of the customers, or the perceived value which the customer had which the customer had expected. So when it meets, when this both meet, the customer feels highly satisfied and delighted, right? So these are the key terms which you should have known. And now coming on to the evolution of marketing. Evolution of marketing is also addressed as the concepts of marketing, the orientations of marketing, and the philosophies of marketing. So marketing has evolved over a period of time. Its concept started from production concept, have come down to the societal marketing concept. So there are five concepts which have evolved over a period, which the marketing on marketing over a period of time evolved so much so that there are now five concepts that explain the evolution of the marketing. So when initially marketing was done, the production concept was there. So production concept meant that in this concept, the theorists of that time thought that marketing means that you should focus on production. Professor Theodore Levitt of Harvard, a celebrity on marketing, called production concept as as a marketing myopia, because in production concept the thinking was that a marketer should produce as much as it can, and then after that try to sell it, because more production would lead to economies of scale, which would lead to the products to being produced at cheaper rates. So it would be very beneficial for the organization, and hence the production concept was prevailed at that time. So when this production concept was adopted, and it became it was not now accepted, a new concept that came over a period of time. It was realized that the production concept would not work, and it is not helping in selling the products, because if you do a lot of production, it does not mean that the product would sell. The product would not automatically sell. So then the product concept came into being. And it was during this production concept only that this concept of marketing myopia came, wherein you are focusing on the product and losing sight on the long term goals, which is or long term goals, or the long term long term focus is lost, that is the customers. So you're not talking about customers. So that, and in the product concept, then the next concept came, which is the product concept. इसके अंडरलाइन असम्पशन क्या था कि कस्टमर्स वही प्रोडक्ट फेवर करेंगे या खरीदेंगे जिनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है और जिनके फीचर्स बहुत ही इनोवेटिव हैं. So the whole focus from the more production or the mass production came on to the product. So the focus shifted from production to the product. Now the theorists thought marketers thought that if they will produce quality products, and if their products की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और वो इनोवेटिव फीचर्स के साथ आएंगे, तो वो ज़रूर बिकेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से नहीं चल पाया. मास प्रोडक्शन करने से ये ज़रूरी नहीं था कि मास सेलिंग भी हो रही थी. तो इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का फोकस टोटली प्रोडक्ट पे आ गया. सो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छा नहीं चल पाया, और slowly and steadily the concept that overlapped product concept was the selling concept. उसके बाद आ गया selling concept, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी नहीं है कि उस would be acceptable to the consumers. What you are producing might not be acceptable to the consumer might be wanting something else. So then it was thought, okay, let's concentrate on the selling concept. What it focused on was hard sell, कि जो भी आपने बनाया, जो भी करा, इतनी ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करो, इतनी ज़्यादा हार्ड सेल करो, इतनी ज़्यादा सेलिंग करो कि वो बिक ही जाए. So the entire focus now shifted on to the selling. So starting from the mass production to the only product
to the selling, selling. So the entire focus shifted onto the selling activities. So it was thought that if we'll concentrate on सेलिंग, कि अगर हम सेलिंग की एक्टिविटीज पे कंसंट्रेट करें, खूब सारी क्रिएटिव सेलिंग में इन्वॉल्व हों, हैवी रिलायंस करें, प्रमोशनल एक्टिविटीज के ऊपर रिलाई करें, तो शायद हमारा प्रोडक्ट बिक जाए. सो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ी देर चला, बट देन इट वाज अगेन over it took over by the marketing concept, which is the most well accepted concept of the times. Marketing concept has been very well accepted till date, और वो आज भी marketing concept ही well accepted है in the marketing theories. So marketing concept क्या कहता है कि maximization of sales और profits होना चाहिए through the satisfaction of customer needs. मार्केटिंग कंसेप्ट ने टोटल फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज को का शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर की तरफ. प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग सब देख लिया, वो नहीं चला, तो अब उन्होंने क्या करा, पूरा फोकस कर दिया कंज्यूमर की तरफ, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर्स. So the marketing concept was came with a very clear, definition of marketing, that is, you need to focus on the consumer needs and their satisfaction, और उनके ही थ्रू आप अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे. मास प्रोडक्शन करके, क्वालिटी प्रोडक्शन करके, सेलिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा aggressive करके, it is not possible that you might achieve what you want to achieve. But marketing concept is a very very comprehensive concept that took note of all these concepts and built, and came out with a very integrative kind of a concept. ये एक integrative concept है जिसमें वो प्रोडक्ट को भी यूज कर रहे हैं, सेलिंग को भी यूज कर रहे हैं, बट विद द मेन फोकस ऑन द कंज्यूमर. सो इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चार प्रीमाइजेस पे बिल्ड किया गया है. वो चार प्रीमाइजेस क्या हैं? सुप्रीमेसी ऑफ द कस्टमर. भाई कस्टमर तो सुप्रीम है, आपको कस्टमर का बहुत ही ध्यान रखना है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट कंज्यूमर वांट्स. उसके लिए रिसर्च करिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या पसंद करता है, और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, उसके हिसाब से सेलिंग एक्टिविटीज़ करिए. The second premise of marketing concept was integrate business functions with marketing at the center of the organization. आपको ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस जो हमने यहाँ पे बात की थी, production also, and HR also, and finance also, along with marketing, all these four functions should be integrated, and they all should work towards the achievement of the main goal, that is the selling, right? That is the marketing. So marketing should stand at the center of all the organizational functions. All should work in a coordinated manner. So marketing should be integrated with other organizational functions. That was number two. Number three was maximization of customer satisfaction. It is very important to see that the customer satisfaction is maximized to the extent possible, and marketing concept took note of that. Marketing concept ने इस बात का ध्यान रखा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ही मेन रहे. और लास्ट में क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं वो अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स के थ्रू ही करने हैं, लेकिन उस केस में आपको कहीं पे भी कंज्यूमर का फोकस लूज नहीं करना है. सो चाहे आप प्रॉफिट से करें, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल से करें, कुछ भी करें, लेकिन फोकस ऑन द कंज्यूमर शुड नॉट बी लॉस्ट, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग, right? So this was the most acceptable marketing concept given, and this concept was very well accepted in the marketing community. Until date, it is the whole marketing is being relies on the four pillars given by the marketing concept, which I have just explained. देन कम्स द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सो अब उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लूज नहीं कर रहा, उसके साथ ही कह रहा है कि सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाए. अलॉन्ग विथ वॉट एवर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेज, societal concept just adds one more thing, that whenever the marketer is trying to build a marketing strategy keeping in view his customer, they should also build upon social, ethical, and environmental considerations into their marketing decisions and practices. So that means मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो है ही है, इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान मार्केटर्स अपने सोशल, अपने एथिकल और अपने एनवायरमेंटल कंसिडरेशन की तरफ भी
रखे अपने मार्केटिंग डिसीजंस में, इन चीज़ों का भी ध्यान ध्यान रखे. सो ये था मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. So with that, I end my introduction to marketing lecture. So this lecture has explained you what marketing is, उसमें key terms क्या हैं, और over the period of time मार्केटिंग कैसे प्रोडक्शन से प्रोडक्ट से फिर सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ आया. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.